What's up, guys? This is me, Humraj Bourai, and yes, we are back with a brand new show. This is That Show. Today, we'll be discussing about a book launch. It's a very well book, nicely written by Dr. Frederick Sidney Correa. And the name of the book is Enhance Your Employability with Ikigai, a simple 7-step program to win at work and in life. I'm very much curious to know what we have in this book. And before I start asking questions, I would like you to know something about him. I'm pretty much sure our listeners would be eager to know about the author. So Frederick is an experienced HR leader who leads the function at a leading investment banking firm. He holds a doctorate in employability studies and is on a various advisory boards as a subject matter expert, helping them shape their curriculum and pedagogy in line with their industry requirement. He is a guest lecturer at various B schools, a keynote speaker at various events, conferences including the IIMs and IITs. He also has been invited to various international conferences by UNDP, SIDA, Sweden, ICAAP, etc. and has worked side by side with many thought leaders, parliamentarians and ambassadors. It's a pleasure to introduce Dr. Frederick Sidney Correa. So Frederick, before we start talking about your book, can you please tell me something about yourself? Like, how was your journey like? How did it all begin? ये एक लंबी कहानी है. When I started off as a child, initially my dad wanted me to be an IAS officer. As I grew up, he also understood, he's not that good, and then he agreed to settle that you should be an engineer or a doctor. फिर मैं और बड़ा होते गया and maths मेरा काफ़ी कमज़ोर था. So my dad realized कि देखो engineer नहीं बन पाएगा तो बेटा आप डॉक्टर बनो. And that's how my journey started. In India, we all follow this sad story where if you're not a science student, you're not a good student. तो हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि either अब अच्छे स्टूडेंट हो तो साइंस स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट नहीं हो तो कॉमर्स स्टूडेंट हो, और अगर एकदम निठल्ले हो तो आर्ट्स के स्टूडेंट हो. तो just to prove to society, just to prove it to my family, though I always had the inclination towards the arts and social sciences, I moved towards this practice or move towards developing my competence to be a doctor and started studying sciences. Now, of course, पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया तो I didn't get through, and I realized one thing कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था. Because when I went to this hospital to give my exam, I went to Calcutta Medical College, and I saw patients lying on the ground, somebody frothing from the mouth, somebody is bandaged, खून निकल रहा है, ये वो, काफ़ी scary situation था. और मुझे realization वहीं हो गया था कि डॉक्टर मैं नहीं बन पाऊँगा. लेकिन फिर भी I joined St. Xavier's College. I became a microbiologist, and एक कॉम्प्लेक्स थी कि भैया मैं Xavier's में हूँ, Xavier's में टॉपर्स आते हैं, and me and my friend, we would both compete for last place, and we both would tell each other कि competition हमारे दोनों के बीच में है, let's see who comes last and who comes second last. But God was kind. I worked hard, did fairly well, got a first class, did fairly well in the college, was elected into the Students Advisory Council, did a lot of activities with people, loved what I did, and I realized that I wasn't a lab person. So when I was doing my masters, I knew कि मुझे microbiology में तो masters नहीं करनी है. So I pursued my masters in biotechnology. So I was fortunate, got a scholarship, went to do my masters in biotech, hoping that I would get a industry-oriented outlook and I would get a job and I wouldn't have to work in a lab. Did fairly well over there. I remember I was shocked in my first semester when I got a 8.6 GPA because I barely studied. But I realized one thing: if you study in Calcutta University, after that every university seems quite easy. So especially if it's a private university. So it is there where I started studying other aspects such as behavioral science, and I got into Six Sigma, quality management systems, and there's where it got introduced to management for the first time. I really liked that aspect, especially the behavioral science aspect, but it didn't occur to me that that's the line or that's the place I wanted to pursue a career in. Then, I completed my masters in biotech and was fairly lucky, got a dream job which I'm sure every one of my batchmates would have given a hand and limb for. So I got a job in the quality management department of
one of the most prestigious pharmaceutical companies, and I shall not name them because that's one thing I've left out of my CV. I worked there only for a month. What's interesting is when I was working over there for a month, I realized that I was running after and I was trying to prove to the world that I was good and I deserved their respect. I wasn't doing what I wanted to do. Right? 1 month, my job was fantastic. What I had to do, I was working with this HPLC machine, and this is the most expensive equipment which you would never find in any college. And all biotechnologists dream to work on that machine. My job, well, I had to work on that 24/7. Very, very nice job. We had different shifts. And in my shift for 8 hours, all I had to do was sit in this air-conditioned 4x6 room, put a sample into this machine, and then make my notings and give my feedback, which would then go to the manager who would be managing the fermentation or would be managing the fermenter. So he could manage the quality of the batch which was being produced. मैं करता गया. People were calling me and asking me, you must be loving this job. And I kept telling myself, is it? Am I running? I realized this, and after so many years, many people are just running this rat race to be successful, only later to realize that this ladder or this corporate ladder they are running on to get on the top is just leaning against the wrong wall. 1 month later, I questioned myself, what am I doing? Well, I got a call from Kunal, who was working with Shram Biotechnologies, and it was a startup, and he said, you know what, Fred, why don't you come work with us? And I said, yeah, I'd come and work with you on one condition. मुझे lab में काम नहीं करनी है. Give me a management oriented role. Because of my exposure, because of my interest in behavioral sciences, I said, you know what, Kunal, would you give me a role in HR? And he said, you know what, आ जाओ. It's a startup. HR का role तो मैं बिल्कुल दूंगा. लेकिन, you'll have to get your hands dirty. I said, no problem. 2 years I worked over there, did fairly well, fantastic experience, and I realized, you know what, finally I know what I want to do in life, and I chose HR. And then I went to Goa Institute of Management. Now my journey at Goa Institute of Management was very interesting. I knew I wanted to do HR. GIM is known for marketing. They also do fairly well in finance, but they have a very small batch in HR, and of course things have changed now, but in my time wasn't very well known for HR. And everyone told me I was a fool to take HR. But I knew that I am spending 10 lakh rupees. I'm spending 2 years of my life. पैसे तो मैं कमा लूँगा. ये तो 2 साल opportunity cost भी है जो मैं कमा रहा था at Shram. I could have made that money up later also. So money wasn't a factor. But what I knew इसकी मैं अपने लाइफ का 2 साल और इन्वेस्ट कर रहा हूँ. एंड मैंने काफ़ी मिस्टेक्स कर ली दूसरों लोगों की सुन के. ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ टू अदर्स, ट्राइंग टू टेल सोसाइटी कि हाँ आई एम अ गुड स्टूडेंट, ट्राइंग टू मेक माई फैमिली प्राउड. आई वॉन्टेड टू डू वट मेक्स मी हैप्पी, राइट? एंड आई न्यू कम वॉट में मुझे HR लेनी है. प्लेसमेंट टाइम आया, हम लोग सब टेंशन में थे. आधा बैच प्लेस हो गया, HR का जॉब्स आ नहीं रहा था. lot of people told me multiple times, marketing ले लो, marketing ले लो, marketing ले लो. You got good communication skills, आप बेच सकते हो. But I knew, I was very clear कि मुझे बस 3 चांस चाहिए. See, God was kind कि I got my job on the first day. I had 2 interviews that day, 2 different companies. But I was very lucky that I got my job in my first attempt. Or you can say both attempts were on the same day. But I got my job then. बट आई न्यू कि मुझे 3 अटैम्प्ट चाहिए था, क्योंकि कभी कभी दिन ख़राब होती है, कभी कभी इट डिपेंड्स ऑन द रिक्रूटर. सो 3 अटैम्प्ट्स बिकॉज यू डोंट वांट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट. सो आई ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ कि अगर मुझे 3 मौका मिले ना, मैं निकाल लूँगा. एंड आई वर्कड माई एस आउट एंड आई वर्कड रियली रियली हार्ड. I tell you, I studied the syllabus at least 20-25 times over. But 20 से 25 बार. My memory was always good. So today, even when I go to B school to interview students, and if we go on a test and we go on a one-on-one, I'm sure I'll remember more concepts than them, because God has been kind and He's given me this memory. But what was very important was that realization that, you know what, you have done whatever you had to, and I was getting old also.
This was my second master's degrees. I had worked for a couple of years. I was 26, 27. A lot of people who had decided what they wanted to do, or at least went with the flow, whatever they were doing, they were happy at what they were doing, or at least thought they were, because I know a lot of them are seeing stars right now. A lot of them are confused. A lot of them are reevaluating where they are in their career, and are making a lot of career switches now. But that was the time where I felt that these people are going ahead of me. But I said no problem. You know what? ये करियर एक मैराथन होती है, और ये 30 साल की मैराथन होती है. ये 1-2 साल के लिए नहीं है. तो अगर कोई मेरे से 2-3-4 साल आगे है भी, ये लास्ट राउंड में मेकअप कर लूँगा. There's one chapter in my book where I talk about delaying gratification. And if you need to be successful, you should be successful in the second half of your journey. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पहले हाफ में क्या होता है, आपके पास अच्छा मैनेजर होता है, अच्छा मेंटर होता है, जो आपको सही दिशा दिखाता है और आप ग्रो करते हो. लेकिन अगर आप अपना फाउंडेशन बिल्ड नहीं करते, राइट, तो सेकेंड हाफ में जब आप वो पोजीशन पे पहुंचते हो, तब बड़ी दिक्कत होती है. सो देयर आर सर्टेन लर्निंग साइकिल्स ऑल्सो विच यू लर्न व्हेन यू स्टे लॉन्ग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच आई टॉक अबाउट एंड आई विल कवर अ लिटिल लेटर. तो मेरे दोस्त लोग आगे बढ़ गए थे, मैं पीछे रह गया था. मेरे पेरेंट्स, एक्चुअली माय डैड काफ़ी नाराज़ थे. वो बोल रहे थे कि क्यों कर रहे हो, तुम ऑलरेडी एक मास्टर्स कर लिए, इतना पढ़ाई कर लिया, अभी तुम काम करो, काम कर रहे हो, अच्छा खासा जॉब है, क्यों छोड़ रहे हो. मैंने पापा को बोला, पापा देखिए, मैंने अब तक सबके लिए किया, अभी मैं खुद के लिए करना चाहता हूँ. तो उस टाइम पापा और मेरे बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पापा ने बिल्कुल मुझे 100% सपोर्ट किया. एंड मैं जो हूँ, who I am today is all because of him. And मैं सबको बोलता हूँ कि the little knowledge I have, I am only cut piece. जो खान है वो पापा है. तो I always share that with everyone, and he has co-authored this book with me. So it's very interesting. It was his dream always to write a book. It was my dream, and I always had this cause to share this knowledge, and I'll tell you how this happened. So when I reached B school, and B school में मुझे HR लेना था, तो मुझे पता था कि मुझे बस 3 मौका चाहिए, और वो 3 मौका अगर मुझे मिले तो मैं जॉब निकाल लूँगा. मुझे ज़रूरत नहीं है कि 30 नौकरी आए, अगर 3 नौकरी भी आए मैं उसमें निकाल लूँगा. तो मुझे अपने आप में वो कॉन्फिडेंस था. पढ़ाई तो मैंने बखूबी की थी. लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग हो गया था. 2 इंटरव्यू में मैं गया, और एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, दोनों इंटरव्यू में, पहला इंटरव्यू में वो एक इंश्योरेंस कंपनी थी, वो मार्केटिंग के रोल के लिए आए थे, सेल्स के लिए आए थे, और HR के लिए भी आए थे. एंड मैंने HR के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ का जो HR मैनेजर था वो पहले भी सेल्स में था, और उन्होंने 10-12 साल सेल्स में नौकरी करके वो HR में शिफ्ट हो गए. तो वो मुझे कन्विंस कर रहे थे कि देखिए, आप में पोटेंशियल है, आप सेल्स कीजिए, आप HR में मत जाइए, आप HR में बाद में भी जा सकते हो, जैसे मैं आया हूँ. तो अगर आप सेल्स में जाओगे तो मैं आपको अभी का अभी स्पॉट ऑफर देता हूँ. इमेजिन द प्रेशर. आधा बैच प्लेस हो गया है. यहाँ पे इतना टेम्पटिंग ऑफर कि आप सेल्स ले लो तो मैं आपको नौकरी दूंगा. और वो काफ़ी अच्छा पैकेज, 10 साल पहले 8.5 लाख रुपए का पैकेज था, जो काफ़ी अच्छा था. एक कश्मकश में मैं था, लेकिन मुझे ये एब्सोल्युटली क्लियर था कि व्हाट, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मैं वापस वो गलती नहीं दोहराऊंगा. तो मैंने बोला, सर, आई रिस्पेक्टफुली वुड लाइक टू डिक्लाइन दिस ऑफर. अगर आप मुझे HR का जॉब देंगे तो मैं 2 हाथों से ले लूँगा, लेकिन अगर ये सेल्स का हो तो मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैं बड़ा क्लियर हूँ कि मुझे ये करना है. मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था. फिर मैं दूसरा इंटरव्यू में गया. दूसरे इंटरव्यू में ये जो इंटरव्यू था, एंड इनफैक्ट ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ माई गाइड, एंड व्हाट आई एम टुडे, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम. And as a professional, he's taught me so much. And there's one thing which attracted me to the organization is, जब वो आया स्टेज पे और वो कंपनी के बारे में बात करना लगा, एक पैशन दिखता था, एंड मुझे पता था कि मुझे ऐसे बनना है. So it was great. And when I went to him, and when we were doing the interview काफ़ी अच्छा गया था. उन्होंने मेरे से काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे, जिसका ऑफ कोर्स
मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था. I was the valedictorian and gold medalist of my batch, just so you know that. So a technical situation. So I won the gold medal for the best communicator. So technical में I was pretty sure. I had studied this syllabus so many times कि मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती. लेकिन आखिर में उन्होंने भी वही क्वेश्चन किया कि फ्रेडरिक, आप सेल्स में बड़े अच्छे करोगे, आप सेल्स क्यों नहीं करते? ये क्या हो रहा है? एक ही दिन में एक ही चीज़ 2 बार. मैंने बोला, सर आप श्योर हो कि मैं सेल्स कर पाऊँगा? वो बोलता है हाँ, मैं श्योर हो कि आप सेल्स कर पाओगे. सेल्स में जॉब है क्या? ऑफ कोर्स मैंने बाद में पता किया कि उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था. ही जस्ट वांटेड टू नो हाउ क्लियर आई वाज. लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं पता था. तो मैंने बोला, सर यू एब्सोल्युटली श्योर कि मैं सेल्स अच्छा कर पाऊँगा? तो उन्होंने बोला हाँ, बोलो सेल्स, वुड यू लाइक टू साइन अप फॉर द सेल्स जॉब? सो आई सेड, सर अगर आप सोचते हो कि मैं सेल्स में बहुत अच्छा हूँ तो आप बिल्कुल मुझे HR में लीजिए. तो ही वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड. ही सेड व्हाई? आई सेड, सी सपोज आई वाज सेलिंग अ बिस्किट और आई वाज सेलिंग अ प्रोडक्ट. मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता था. पीपल कुड टच इट, पीपल कुड फील इट, people could experience the service if it was a service, and I can go door to door, one customer to another. अगर कोई पसंद नहीं करता है तो मैं दूसरा कस्टमर के पास जाऊँ. राइट, दैट इज सेल्स. मुश्किल जॉब है, राइट? एंड यू थिंक आई कैन डू इट? लेकिन HR और भी मुश्किल जॉब है, बिकॉज आई एम सेलिंग थिंग्स विच आर इंटेंजिबल, जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन, प्रॉमिस ऑफ अ गुड करियर. आई एम सेलिंग द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो आप फील नहीं कर सकते अनलेस यू कम एंड जॉइन अस, जो आप टच नहीं कर सकते. एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग, कि मैं ऑडियंस को छोड़ नहीं सकता. वो जो 200-300 एम्प्लॉई है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे उनको ही ये बेचना है और बार बार बेचना है. एंड आई गॉट टू एंगेज विद देम. सो इफ़ यू फील आई एम अ गुड सेल्स पर्सन, प्लीज़ हायर मी फॉर HR, बिकॉज HR हैज़ टू सेल, एंड इन लाइफ एवरीवन इज सेलिंग. आइदर यू सेल फॉर और अगेंस्ट. सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप भी तो सेल्स ही कर रहे हो. यू आर सेलिंग मी अ ग्रेट जॉब और ग्रेट करियर एट योर ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक आई कैन डू दैट. सो इफ यू फील आई एम गुड एट सेल्स, sir, then definitely I'm good at HR. Please hire me. So God was kind, and so was this gentleman. And I was fortunate. I got the job on my birthday. Oh, great. Joined that investment banking firm. Did very well. So what was his reaction when he gave this answer? He smiled, and he gave me a spinner, and he said, you know what, Fred, I will let you know tomorrow. There's another interviewer interviewing someone else in another batch, and we'll share our notes, and we'll let you know tomorrow whether you have this job or not. But if you do, I look forward to working with you. So even after having a fantastic interview and after giving this answer, उन्होंने मेरे को वो suspense में छोड़ा. And the next day was my birthday. He called me. He said, you know what, Fred, you got the job. And I was thrilled, and I was even more thrilled because this gentleman was my boss. And he's been a great mentor to me, and that's what I talk about in one of the chapters, how a very strong mentor is very important and can shape your career. And today he is, of course, grown to a very senior position. But if I am able to lead the HR function today, if I've been able to contribute to one of our businesses which wasn't doing well, to turn it around to what it is today, it is only and solely because of this gentleman. With special mention, I have to mention his name, Ameya. If you're listening, I have to acknowledge the role you have played in my career. Thank you so much. God bless you, and I hope you're always by my side. Exactly. Talking about mentorship, I feel like a mentor is someone who carves an individual, and he is pretty much sure about every step which you are about to take. Oh, absolutely. One thing unique about Ameya was, unlike my teachers who taught me what was right and wrong, Ameya taught me how to win. So if I would like to put it, he would be my Harvey Specter. And what I am is totally because of his mentorship. And trust me, if you had asked me this question in the first few years while I was working with him, my reaction would have been very different, because he used to push me, he used to stress me out, he used to shout at me, he used to point out the smallest attention and said, no, ye aur better ho sakta hai, no, ye aur better ho sakta hai. I was so close that one day I almost blasted, but of course
He also has matured so much as a leader, so much as a mentor. He is today heading one of the divisions in our firm, and his mentorship and his leadership also has evolved so much more. And I always tell the folks who are the younger lots who have been trained under him that you have missed out on the best part of Amaya, because I believe a tough boss is very important. So of course, with millennials coming in, his leadership style has changed. But I think, a tough boss is very important. And your boss has got to teach you to win. He's not got to teach you, how to be good. He's got to teach you how to be the best. Absolutely. So Frederick, can you tell me one thing, like, you were going through this job, like you got this job, and how did you end up doing a PhD? वो ऐसी क्या चीज़ हुई जो आपको लगा कि नहीं यार मुझे PhD करना चाहिए? So when I joined this firm, I was largely looking after campus recruitment. And the problem is HR के बच्चे place नहीं होते थे. और मैं जब GIM में था, तो ये प्रॉब्लम मुझे भी था. तो मैंने तय किया था कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस स्पेस, एंड मैं चाहता हूँ कि HR के बच्चे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी कांट जस्ट डिपेंड ऑन TISS, वी कांट जस्ट डिपेंड ऑन XLRI. इतना सारा टैलेंट है इंडिया में. अगर हमारा HR डिपार्टमेंट ही स्ट्रांग ना हो तो कैसे हम उसको शेप करेंगे? इन 2039, एंड दिस इज थ्रू स्टैटिस्टिक्स, इंडिया विल हैव द लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन एंड विल ओवरटेक चाइना. If the HR function is not developed, this same boon can be a bane. Because either we can become the talent capital of the world, or we can become the world's new sweatshop. So HR was very, very important, and I wanted to contribute to this fraternity, and which is why I pursued my PhD on employability studies, and I wanted to focus on HR folks to help them shape their employability. It is there where I met my guide, and my guide said, you know what? A lot of people do PhD क्योंकि उनको career advancement चाहिए, उनको professor बनना है, लेकिन तुम्हें एक passion है, you have a cause. Don't limit it only to HR folks. Do it for all management students. So I took his advice, and there's where my journey began, my PhD on employability studies. I went through more than 350 research articles. I read numerous books on employability and things all over the country. Went to 800 HR recruiters who go to B schools to hire, and asked them, what is it that you hire for? And that's the base of my study, and I used a construct known as employer satisfaction. अगर जो employer हो, अगर वो satisfied हो, तो जो बंदा है employable है. So that was what my study was on. Very passionate. I was doing it 3 years later, जब मैंने अपना पहला पेपर पब्लिश किया, और मैंने अपने फ्रेंड्स को दिया, फैमिली को दिया. जो मेरे प्रोफेसर थे ना, उन्होंने बोला कि you've done a very good job, fantastic paper. लेकिन जब मैंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को दिया ना, तो एक फेक अप्रिसिएशन मिला कि हाँ अच्छी बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, किसी ने समरी के आगे बढ़ा ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट पढ़े होंगे. तो मुझे समझ में आ गया एक चीज़ कि लोग ये रिसर्च पढ़ेंगे नहीं. क्या आप जानते हो कि every year 500 research articles are published by the IIMs alone? 1.8 billion research articles are published globally. 50% of these articles are never read by other than the co-author and the reader, and maybe his guide or a few friends of his. 90% of these papers are not cited. What is sad is 0.1% of the practitioners in the world actually know that research is done in this space. So I wanted to democratize, revolutionize, and take to the mass what I have studied in these 5 years, and the kind of learnings I have had in my own career. And that was the inspiration for this book. So the whole idea was to take all of these learnings. Of course, my thesis is some 300-400 pages, but I knew the youth is not going to read that. So I made a simple ready reckoner, 120-130 pages, 7 simple steps. It's a workbook, it's a guide. You need to follow step by step to find your Ikigai. Ikigai is a Japanese concept which is your purpose for living. Once you identify that, you make an action plan, have the end in mind, and a step-by-step guide to identify your Ikigai, identify your goal, make your plan how to achieve that goal, and how to increase your employability. A step-by-step program has been developed in this 130 odd pages
or 140 odd pages. Of course, after the book is the final copy is made, I will know exactly how many pages, but I've tried to make it concise because I want people to just follow and read as invest minimum time and have maximum impact. That is the purpose of writing that book. And I hope if I can impact 1% of India's youth, I think my job is done. Oh, great. So basically what I got to know is the main purpose of you for writing this book was to educate the masses on how to find their career and lead their career ahead. Absolutely. The idea is we are running after things which we think, will give us happiness. We are running after what people think things are good. We are running to prove to the world that I deserve this. Well, the concept of Ikigai is very simple, and what I tell people is you need to understand what you're good at. You need to understand what you're passionate about. You need to identify what the world needs, but most importantly, you need to identify what the world is ready to pay for. And an overlap of all of this is known as your Ikigai. Now, what I'm trying to say is, out of 24 hours, let us say you sleep 7 to 8 hours. 16 hours if you're awake, you should spend at least 10 to 12 hours in that sweet spot, which is known as Ikigai. And if you do that, you will find success. Of course, you will have to spend time in the other aspects. But if you spend that time, you will be most engaged, you will enjoy your work. And if you enjoy what you do and do what you enjoy, success will follow. Money will follow. Don't run after money. Don't run after success. Run after what you want to do for 3/4 of the day. And find that overlap, what people are ready to pay for. You'll be surprised. I remember one of these students asked me, "Sir, what role in B school gets the most money? I heard finance students earn the most money." And I told them, "See, I'm going to throw a question back at you. What do you think about the profession of cooking or the profession of cutting hair?" So they looked at me and smiled. I said, "Do you know how much Sanjeev Kapoor or Javed Habib earns?" So the whole idea is, if you run after what you're passionate about, money will come. And you don't go for this short-term success. कौन सी जॉब में मुझे पहले साल में, पहले 2 साल में, पहले 5 साल में सबसे ज़्यादा सैलरी मिले. Run after where do you see yourself 30 years down the line. What job is going to get you closest to that spot? Money will come. And case in point, I made so many mistakes in my life. I have a couple of master's degrees. I did a third one in labor laws. Of course, that was because I needed to. I was handling the legal aspect of my firm, especially when it comes to HR, and a PhD and multiple certifications. But I have only close to 9 years experience, and today I'm leading the HR function in a leading investment banking firm. I don't think with the kind of mistakes I would have made. Of course, the organization has given me a lot of opportunity and has been very kind and has understood, respected and reciprocated and rewarded my hard work. But it wouldn't have been possible if I hadn't followed my calling. Absolutely. वो क्या होता है ना कि अपॉर्चुनिटी तो हर किसी को मिल जाती है, बट लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाता, और एक कुछ ही लोग होते हैं जो कि उस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं. दैट्स वन क्वेश्चन विच इज राइजिंग इन माई माइंड, लाइक यू बीइंग एन एचआर, व्हाट आर दोस क्वालिटीज विच यू सी इन द कैंडिडेट विच प्लीजेस यू द मोस्ट बीइंग एन एचआर. जैसे कि हाँ, इस कैंडिडेट में ये बात है, मुझे इसे ले लेना चाहिए. बिल्कुल. और मैं ये क्वेश्चन मैं सिर्फ अपना तजुर्बा नहीं, बट जो 800 HR प्रोफेशनल्स से मैंने जो इनपुट्स लिया था इन माई PhD, वो शेयर करूँगा. 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयर सेटिस्फैक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं. वन इज़ सेल्फ डायरेक्टेडनेस ऑफ द स्टूडेंट, ओके, और दूसरा है ये कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस सच एज द इन्वायरमेंट, कि आप किस इन्वायरमेंट में पले बड़े हो, कौन सा बी स्कूल में गए हो, उस बी स्कूल में क्या इंडस्ट्री इंटरेक्शन होता है, क्या कॉम्पिटिशंस होता है, आपको क्या एक्सपोजर मिलता है, किस तरीके की फैकल्टी आते हैं, क्या इवेंट्स होता है, आपके पीयर्स कैसे हैं, आपके बैचमेट्स कैसे हैं, इस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन ये भी शेप करता है. और दूसरा, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे भी व्हाट मैटर्स इज व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओवर देयर. जैसे उनकी पॉलिसीज़ कैसे हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ
emphasis they give to your career anchors. Now when I say self-directedness means आपको अपने आप में इंटरेस्ट है कुछ पाने का. You have to identify your career anchors. This is something which this is one of the tools I use in my book, and I share the importance of it. Also, there are various psychometric tests which you need to go through. So once you discover who yourself and understand your career anchors, the emphasis एक organization उस career anchor पे दे. क्योंकि at the end of the day, organization will always think of themselves first. तो उन लोग चाहेंगे कि आपका करियर और उनका करियर कहाँ ओवरलैप करे. अगर आप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पे दे तो दे विल लुक एट इट फ्रॉम देयर एंगल. उसीलिए द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर करियर एंकर्स. जब आप वो पहचानते हो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई. क्योंकि मैनी टाइम्स हम लोग एक जॉब का जो प्रेस्टीज है, टाइटल है, मनी है, फेम है, या लोग क्या कहेंगे, उस चक्कर में हम गलत जॉब ले लेते हैं. So this self-understanding is very important. So to make it short, self-directedness, self-understanding are the major factors which employers and HRs look for. क्योंकि अगर आप मुझे आके बोलते हो कि you know what, Frederick, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ और मुझे पता है कि ये जॉब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं करूँगा तो मैं यहाँ ज़रूर पहुँचूँगा, राइट? लेकिन अगर आप आके मेरे को बोलेंगे सर ले लीजिए ना सर, अरे सर कुछ भी कर लूँगा सर वो सीख लूँगा सर, आप जहाँ डाल देंगे कर लूँगा, तो आप किसको हायर करेंगे, राइट? सो सेल्फ डायरेक्टेडनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप जानते हैं आपको कहाँ जाना है, आई एम श्योर एंड दिस इज व्हाट माय रिसर्च आल्सो सेज दैट पीपल विल सपोर्ट यू ऑन दिस जर्नी. बट इफ यू डोंट नो वेयर टू गो एंड यू डोंट हैव गोल क्लैरिटी, देन यू आर लॉस्ट माय फ्रेंड. Because and I love this thing, and this is something which I have quoted earlier also, कि how come under the same set of circumstances some people break records while others break themselves. Background same रहता है, colleges same रहता है, companies में भी वो same ही घुसते हैं, लेकिन some people break records while others break themselves. And if I ask you the key aspects which you find more highlighting in that particular candidate, so what would those qualities be, or what would those key aspects be in terms of experience or that particular person in general? See, if you look at social sciences, society कैसे progress करते हैं, one generation passes its wealth on to the other. अगर हम थोड़ा टेक्निकल जाते हैं इसमें, हम मैस्लो का जो लेवल्स है, मैस्लो का हायरार्की, वो हर कोई जानता है. पहला क्या आता है, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, राइट? जब वो हो जाता है देन पीपल लुक एट हायर ऑर्डर नीड्स लाइक सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स एक्सेट्रा. इंडिया का जो कल्चर है वहाँ पे पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव, और उन्होंने ये रोटी कपड़ा मकान हमें दे दिया है. तो जो पहले का जनरेशन होता था वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देखता था, लेकिन हमारा जनरेशन लाइफ टाइम एम्प्लॉयबिलिटी देखता है. वो शिफ्ट हो गया है. हम चूज़ कर सकते हैं कि हर 2-3 साल हम चेंज करें, हमें ये लग्जरी है. लेकिन क्या ये बात अच्छी है, क्या ये बात बुरी है? वेल, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ. और लोग बहुत बार बोलते हैं कि ये आई एम अ स्मार्ट वर्कर, आई एम नॉट अ हार्ड वर्कर. और ये आई डोंट वांट टू डिस्करेज देम, बट द होल आइडिया इज, ये जो जॉब शिफ्ट्स होते हैं ना, बुरी बात नहीं है. जॉब शिफ्ट करना अच्छी बात है. लेकिन हम क्या गलती करते हैं, जब हम जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा कंपनी में क्या मिल रहा है जो हमें इस कंपनी में नहीं मिल रहा है, राइट? फिर हम वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ हम इसलिए नाखुश हो जाते हैं क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ क्या नहीं मिल रहा है जो पहले कंपनी में मिलता था. फिर हम तीसरा जॉब में चले जाते हैं. तो द बॉटम लाइन इज दिस, कंपैरिजन इज नॉट गुड एंड वी आर लुकिंग एट द रॉन्ग थिंग. हम लोग पैसा देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, राइट? वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयबिलिटी. एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? लोग बी स्कूल क्यों जाते हैं? किसी से भी पूछो, उन लोग बोलेंगे भाई जॉब के लिए जाते हैं, जो एब्सोल्यूट गलत है. एम्प्लॉयमेंट इज इंसिडेंटल. आप बी स्कूल गए हैं, 2 साल बाद नौकरी लगना है. Employability is the major focus. What is employability? Employability is a strategy, 1, to get the job, 2 is to be successful in that job, 3 is to grow in that job, and 4, when required, to change the job. Right?
लेकिन यहाँ पे हम लोग गलत रीज़न के लिए शिफ्ट करते हैं, 50,000 रुपये, लाख रुपए, 2 लाख रुपए के लिए, बड़ा रोल के लिए। हर किसी के करियर में कुछ लर्निंग साइकिल्स आते हैं, एंड क्योंकि हमारा करियर करीबन 30 साल का होता है, एक लर्निंग साइकिल 4 से 5 साल का होता है जनरली। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेट्स से अ पेन। उसके 5 स्टेज होते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, आप पहले कंपनी में काम करते हो, आपका जो फ्रेंड है वो उसी कंपनी में रहता है, और वो स्टेज 3, 4, 5 उसी कंपनी में रहता है 5 साल तक। आप क्या करते हो, पहले 2 स्टेज के बाद आप दूसरे कंपेटिटर में चले गए, राइट? वहाँ पे आप स्टेज 3, 4 और 5 सीखते हो। अगर दोनों कैंडिडेट मेरे सामने आएंगे और मुझे चूज़ करना है, मैं उनको चूज़ करूँगा जो वो एक कंपनी में सारा स्टेज किए हैं, बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटेड हिज लर्निंग साइकिल। हिज लर्निंग हैज़ बीन एक्सपोनेंशियल, बिकॉज वो तीसरा या चौथा साल में वो चीज़ें का रेपरकशंस देख सकता है जो डिसीजंस उसने पहले और दूसरे साल में लिया, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में लिया। तो उसका जो लर्निंग है इज़ एक्सपोनेंशियल। वो चौथा साल में सीख रहा है कि उसने फर्स्ट ईयर में क्या किया, लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट जो दूसरा कंपनी में जाता है उसका लर्निंग लीनियर होता है, क्योंकि वो सारे स्टेज तो जरूर सीखता है लेकिन वो मिस्टेक से नहीं सीखता। आई विल थ्रो अनदर एग्जाम्पल। सोचिए 2 बंदे आते हैं, ओके? एक बंदा 3 साल से एक ही प्रोडक्ट बॉम्बे में बेच रहा था, और दूसरा बंदा है जो वही प्रोडक्ट 1 साल कलकत्ता में बेचा है, 1 साल दिल्ली में बेचा है, 1 साल बेंगलोर में बेचा है। आप किसको हायर करोगे? या फिर अगर ये सवाल मुझे आता तो मैं किसको हायर करता? ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस फैक्टर्स, लेकिन अगर सब फैक्टर्स सेम होते, और सोचिए मैं ये हायर कर रहा था इंदौर के लिए जो कम्प्लीटली न्यूट्रल है, तो कोई टेरिटोरियल एडवांटेज है नहीं, तो मैं किसको हायर करता? ना, ऑफ कोर्स वेरियस फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर सब फैक्टर्स सेम होते तो मैं उस बंदे को हायर करता जो 3 साल से मुंबई में था। क्यों? क्योंकि ही इज गॉन थ्रू अ डीपर लर्निंग साइकिल। सोचिए आपको फल तोड़ना है पेड़ से, ओके? पहले आप कौन सा फल तोड़ेंगे? जो नीचे है, द लो हैंगिंग फ्रूट, ओके? बिजनेस भी वैसा है। जब आपको क्लाइंट्स उठाना है ना, पहले आप वो लो हैंगिंग फ्रूट्स उठाते हैं। जो पहला साल में आपने वो कर दिया, अभी आपको और बिजनेस करना है, आपका सैलरी बढ़ेगा, आपका चैलेंज बढ़ेगा, टारगेट बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे? देन यू विल मूव टू द मीडियम हैंगिंग फ्रूट्स, राइट? एंड देन जब आपने वो भी हासिल कर लिया, तीसरा साल में यू विल मूव हायर इन द ट्री, राइट? लेकिन ये दूसरा बंदा जो पहला साल कलकत्ता में था, उसने जो ईजी क्लाइंट्स थे उन्हें कलकत्ता का उठा लिया। फिर दूसरा साल आपने दिल्ली में डाल दिया, तो वो दिल्ली के लो हैंगिंग फ्रूट्स को उठा लिए। तीसरा साल आपने बेंगलोर में डाल दिया, तो बेंगलोर में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वो उन्होंने उठा लिए। सो यू सी द डिफरेंस इन द लर्निंग साइकिल। दिस पर्सन हैज़ लर्न टू डील विथ मोर डिफिकल्ट क्लाइंट्स, and that is where stability plays an important part. So even if the person's in the same company, in the same role for a longer period of time in the same place, always the learning is much more than multiple locations, even if both were from the same company. So I've given you 2 examples, one where 2 people are in 2 different companies, and where 2 people are selling the product but in the same company. So ये जो learning cycles है, ये बहुत important होते हैं, and you have to try to push for these learning cycles. Get involved in larger projects. If you do this in your career, you will be successful and you will grow fast, right? And this is my favorite line. I got this from a very nice author. His name is Chandramouli, and I really like this line. And he says, time spent at work does not translate into experience. Just because you spend 25 years doing something, that does not mean 25 years experience. It can be 1 year experience 25 times over. Just like saying I have 25 years of sleeping experience. क्योंकि मैं 25 साल से सो रहा था, तो 25 साल का experience है. The same way, if sleeping for 25 years doesn't become sleeping experience, the same way working for 25 years doesn't become working experience. It is working on these learning cycles. And जो HR होते हैं वो ये देखते हैं आप में कितना डेप्थ है. So अगर एक नेचुरल फ्लो है, जो मैंने बोला ना, MBA इज़ दैट रेलवे प्लेटफॉर्म. आपको क्लैरिटी चाहिए कि मुझे कलकत्ता जाना है कि चेन्नई जाना है, और आप अकॉर्डिंगली ट्रेन पकड़ोगे. जॉब आपका ट्रेन हो, ओके ना? आपको चेन्नई जाना है तो यू विल नॉट टेक द ट्रेन गोइंग टू द ईस्ट, राइट? यू विल टेक द ट्रेन गोइंग साउथ. भले यू विल गो ऑन द ट्रेन टू बेंगलोर से दूसरा ट्रेन आप लोगे चेन्नई जाते हुए. अगर वो
हमें दिखता है कि there's a natural flow in the job shift, it is acceptable. लेकिन पहले आप राजधानी एक्सप्रेस में बैठ गए, दिल्ली जा रहे हो, राइट, जाना है चेन्नई आपको, तो उतना समझ HR को आता है कि दिस पर्सन इज लॉस्ट. सो दैट करियर क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, सोचिए आपको जाना, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, तब आप रेलवे स्टेशन जाओगे और आप अटक जाओगे क्योंकि आपको पता नहीं कि कैलकाटा का ट्रेन पकड़ूँ कि चेन्नई का ट्रेन पकड़ूँ. तो क्या होगा, दो चीज़ें हो सकती है. आइदर आप प्लेटफॉर्म पे अटके रहोगे या आप देखोगे लोग कहाँ भाग रहे हैं. जो ट्रेन में सब भाग रहे हैं आप सोचोगे कि भाई मैं उसमें चला जाऊँ. But that's not the right way. You need to have the goal or the end goal in mind. कलकत्ता जाना है तो मुझे ट्रेन पकड़ना है जो वहाँ जा रहा है. एंड अंडरस्टैंड, अगर MBA या जो कॉलेज डिग्री है वो प्लेटफॉर्म है, तो जॉब आपका ट्रेन है, वो डेस्टिनेशन नहीं है. योर जॉब इज़ नॉट द एंड, योर जॉब इज़ अ मीन्स टू एन एंड. अंडरस्टैंड दैट. इट इज़ जस्ट दैट व्हीकल विच इज़ टेकिंग यू ऑन योर जर्नी टू योर गोल. सो दैट इज़ वॉट we see. So goal clarity is very, very important. This is covered in one of the chapters. In fact, this is what my research has been on. So the first chapter talks about what are the aspects which impact employer satisfaction, so that you know कि क्या क्या factors है. उसके बाद what are the factors जो आपके कंट्रोल में है. अब बहुत सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते. तो जो आपके कंट्रोल में है, how to make an action plan, how do you find how to get that goal clarity, what are your strengths, how to audit it, how to build that action plan. That is what the book takes you through, a step by step journey. So Frederick, your book consists of 7 chapters and those are actually the 7 steps. Can you please help us know about these 7 steps? Well, like I said, the first step is understanding or identifying what is employer satisfaction. What are the factors which contribute to employer satisfaction? And this piece directly comes from my study. Okay? The second chapter talks about discovering your Ikigai. What is Ikigai? Your purpose for living. The third chapter talks about owning your personal development plan. So this is where we do a goal setting exercise. We identify what are the steps, what are the skill sets. There are various strategies given to identify, fix the goal, and then how do we move towards that goal. The next chapter is on constructing your pigeonhole and how do you develop your own life story. Because understand, people love stories. Your interview, you are the hero of your story. How do you develop your pigeonhole and how do you sell that and how do you be successful in that is the next step. The step after that is applying for the right job the right way. What are the strategies, how you need to apply for that job. Chapter 6 talks about winning when it matters. So once you have got that job, the journey doesn't end there. You need to understand when to win. Do you want to win in and understand that career is a marathon and not a sprint? So do you want to win in the first few years? Or do you want to delay your gratification and win when it matters? So this chapter talks about all of that. And finally, the last step is how to build an attractive personality, how to build a strong personality, and how to be liked by others at the workplace, respected, adored, and how to develop your own personal brand in the workplace. So it's about creating character. So basically this book has everything a person needs to know about his career path right from the very beginning, starting from the first step. Please correct me if I'm wrong. Absolutely. I like to call, actually it's in the form of the book, it's in the form of a book, but actually I believe it's a 7-step program. And it's not a program and it's not a book which you read once. It's a book which you keep, you revisit again and again. You read a chapter, do an exercise, reflect. Reflection is the most powerful tool which this book talks about, because Einstein says that if you do the same thing again and again and expect a different result, then that is the definition of insanity. तो आपने गोल किया, आपने मेजरेबल आउटकम्स रखे एंड यू रिव्यू दैट, लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि क्यों मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल विच आई ऑल्सो कवर इन दिस बुक, एंड हाउ द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन विच अलाउज यू टू अकॉर्डिंगली चेंज और bring the necessary shift in your mind space so that the momentum you have gained is not lost. And this book is going to be by you at every stage in this journey till the very end. It is not only meant for B-schoolers, it is not only meant for people in early stages of their career, it is meant for anyone
who wants to discover their Ikigai, who wants to understand their purpose of living, who wants to understand their purpose at work, who wants to make a difference. See, if you want a fast track career, definitely this book will help you. But if you want a fulfilling career, this book is a must, right? So that is what this program covers. I'm pretty much curious to know about the launch of this book. ये book हमें कब तक मिल सकती है? When is the launch? Everyone, I've been going to a lot of B schools and I've been talking about this book, and everyone is very excited because of COVID and Corona, and they really want this book to be published at the earliest. But the publishers have given me a time in and around the first week of December. December? Okay, so we'll have to wait until December for this book. काफी time लग जाएगा यार. See, patience is the mother of virtues, and like I said, delayed gratification is what I've been talking about in one of the chapters in this book. And you got to wait for good things to happen to you in life. So I think the wait is going to be totally worth it. तो इन सिंपल वर्ड्स आपके कहने का मतलब ये है कि भाई सब्र का फल मीठा होता है, दिसंबर तक इंतजार कर लीजिए. हाँ जी. See, of course, Varna, you can always connect with me on LinkedIn. You can reach out to me. I'm happy to help. It's my personal mission to help the youth, and this journey started when I was 14. So the purpose of the book is, Robert Kiyosaki says that I don't want to be the best author. I want to be the best-selling author. Well, हर किसी का purpose अलग होता है. My purpose is to impact the youth, and if I can do so, I'd be the happiest person possible. So when we look at the different stages of the book, what I'm going to do, and this is just the beginning of the series. Once you do complete this, and this is of course the primary book which is going to help you achieve that success, but there's going to be a series. This is a series. There are multiple books. They're going to be short 150 page books which are going to help you, and this series is meant to impact everyone who is looking for a job, everyone is looking for satisfaction in a job, or everyone who's looking for success. So there's an entire series, and the next book is going to release very soon. I'm already working on it. So what you're trying to say is कि दिसंबर तक हम वेट करेंगे तो हमें फर्स्ट बुक मिलेगी, एंड उसके लॉन्च के बाद you are about to launch the second book. If things go well, I'm already writing my second book. Maybe by June or August next year, I will look at my second book, and maybe again January is the third book, because the different books are on different steps, and both of them are very important. So you can be looking forward to quite a few books coming in this space. Well, Frederick, talking about book launch and education system, we are talking about business school right now. I just want you to tell me, is our education system good enough to shape our future? Like, do they actually teach us what they should teach us, or are they lacking somewhere behind? I would like to know your thoughts on this. See, in India, education is pretty faulty. I'm very happy with the new education policy which has come, and they have brought a lot of reforms. But if we look at management education in India, and I've done a lot of research in that space, generally you pick up the neoclassical theories of management and you just copy paste what the Westerners have been doing. A lot of these management principles have come from the times of the Industrial Revolution and World War, etc. So these concepts are very old. और आप ये देखिए ना, हम लोग very proudly बोलते हैं कि हम ना हार्वर्ड के बेसिस पे हम अपना सिलेबस बनाते हैं, हार्वर्ड का केस स्टडीज. अंडरस्टैंड, ये इंडिया है, इंडिया का प्रॉब्लम्स अलग है, इंडिया का सिचुएशन अलग है. So our education has to be shaped to our context, and there has to be that contextual influence. If we copy what they teach in Harvard, are we going to get the same result? So our education, at least management education, has been quite skewed and heavily influenced and dominated by the West. Big issue, big problem, which is why I'm on quite a few advisory boards shaping the curriculum for a lot of these B school graduates, a few universities as well, so that people study what is very much in line with what's required, which will help them be successful. And I've developed a model as a part of my PhD thesis, which talks about vocationalizing the education programs which higher education institutes produce. So I will not talk about the primary education and things like that, the educational reforms in the new educational
policy which has been brought in will take care of that. But the focus on higher education institutes to vocationalize these training programs or vocationalize these courses are very important and is largely missing in India. And not just MBA students, the same is with graduates who are engineers. We are producing the most number of engineers, but what we are also doing is producing the most number of unemployable engineers, right? So the education system, especially the HEIs, requires significant or rampant change or in their approach, and industry has to play a very important part, come together with these HEIs and shape this curriculum for the future. So industry also has to take responsibility and it cannot blame the education system. So they have to partner together. Well said. So Freddy, can you please tell me one thing? Like, there's a question which just arose in my mind, and since you were pretty much into books and you have plenty of degrees under your belt, there's one question, and the question is, you as a student when you were in college, तो क्या तुम अपनी life enjoy करते थे? Like, I'm just assuming कि तुम तो 24 घंटा अपने book पे ही रहते होंगे, तो तुम्हारे दोस्तों का रिएक्शन क्या होता था? What was your friends reaction? कि लाइक यार ये बंदा तो enjoy नहीं कर रहा है, ये पढ़ाई करता रहता है. लेकिन गीक तो मैं था नहीं, मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था. आप किसी से पूछोगे, बोलते ये साला पढ़ाई नहीं करता, फिर भी क्लास में वो आता था. जब पढ़ाई तो मैं बिल्कुल नहीं करता था. हाँ, इनफैक्ट ये कनेक्ट हो गया. सी एक्चुअली बात बिल्कुल ऑपोजिट है. आई हैव अ लॉट ऑफ डिग्रीज, बट सर्टेनली आई एम नॉट आई डोंट नो वेयर यू गॉट दिस आइडिया दैट आई एम अ गीक. दो आई हैव 3 मास्टर्स डिग्रीज एंड 1 PhD. आई डोंट ब्लेम यू फॉर रीचिंग दैट कंक्लूजन, बट जब मैं स्कूल में था और आई टेल यू अबाउट माई फ्रेंड, वो बोलते थे साले तू तो पढ़ता नहीं है, फिर भी साले कैसे नंबर आ जाता है, ऑल द टाइम तो घूमता रहता है. एंड ऑफ कोर्स इफ माई पेरेंट्स आर हियरिंग दिस, I don't want them to hear this, but you are of course distracted. They, when you are of age, and definitely there are distractions. Take around to eat pani puri, take people to the mall, etc. तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे भाई तू तो यही करता रहता था, कभी किसी को पानी पूरी खिलाता था, कभी किसी को मॉल घुमाता था, पढ़ाई तो कब करता था. And how were you getting these marks? Honestly speaking, God was very kind. God has given me a good memory. मैं कुछ पढ़ लेता हूँ एक बार तो वो रह जाती है. तो इवन इन बी स्कूल आई यूज्ड टू नेवर स्टडी. मतलब क्लास में मैं जो सीख लेता था एग्जाम से पहले मैंने थोड़ा बहुत देख लिया, वो काफी था. हाँ, लेकिन प्लेसमेंट के टाइम में मैंने बहुत पढ़ाई की. मैंने 20 25 बार एक चीज पढ़ा. दैट वाज बिकॉज मैं कुछ गुंजाइश नहीं रखना चाहता था, और आई डिडंट वांट टू लीव अ स्टोन अनटर्न्ड. बट वैसे मैं बिल्कुल, हाँ, मैं थोड़ा शांत था, मैं थोड़ा गीकी जरूर दिखता था, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था हमेशा. सो आई प्लेड एवरी स्पोर्ट इन स्कूल. आई प्लेड एवरी स्पोर्ट. आई शेयर्ड विथ यू, आई वाज द यूथ एम्बेसडर. आई वर्कड विद द यूनाइटेड नेशंस. फ्रॉम द एज ऑफ 14 आई वाज रोमिंग ऑल ओवर द कंट्री अलोन. आई वाज इनवाइटेड टू वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस. आई वुड गो, आई वुड लर्न फ्रॉम देम, कम टू इंडिया. आई हैव ट्रेन्ड tens of thousands of youth and volunteers in that space. So I used to do everything but study. And you'd be surprised, I was the general secretary of my union. I was also elected into the students advisory council. So generally the people who get elected into union थोड़ा notorious रहते हैं. And I remember my attendance wasn't good and the principal didn't want to, उन्होंने मेरे को admit card नहीं दिया. मैंने बोला सर अगर आप मुझे admit card नहीं दोगे तो आपका एक फर्स्ट क्लास स्टूडेंट कम होगा. तो वो बोला इतना कॉन्फिडेंस. आई सेड सर इतना कॉन्फिडेंस. एंड यूल बी सरप्राइज्ड, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में काफ़ी मुश्किल होता है फर्स्ट क्लास लाना. हर कॉलेज में 1-2 मिलते हैं. जेवियर्स अच्छा कॉलेज, मैंने सबसे बेस्ट कॉलेज, तो वहाँ मेरे साल में 5 जन को मिला. आई वॉज वन ऑफ देम. सो व्हेन आई गॉट दैट फर्स्ट क्लास, माई प्रिंसिपल वॉज वेरी हैप्पी. अरे तुमको मिल गया. स्पेशली जब व्हेन आई वॉज डूइंग ऑल ऑफ दिस टाइम पास एक्सेट्रा. बट आई टेल यू, जो एक्चुअल लर्निंग होती है ना, वो इसमें होती है. इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, डिफरेंट एक्टिविटीज में वर्क करना, फंड्स उठाना, स्पॉन्सरशिप्स लाना, हाउ टू मैनेज पीपल. बिकॉज आई वॉज द ब्रिज, बिकॉज ये HR का काम तो मैं पहले से कर रहा था. आई वॉज द ब्रिज व्हेन आई वॉज इलेक्टेड इनटू द यूनियन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द मैनेजमेंट, राइट. ऑफ कोर्स आई वॉज मोर लाइक अ यूनियन लीडर देन, बट देन आई ट्रांजिशनड विद माय लर्निंग्स इनटू द HR रोल. बट मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स वहीं से शुरू हो गई थी. तो जो एक्चुअल लर्निंग है, जो एक्चुअल स्किल्स है, वो तो वहीं से आई हैव लर्नड. माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में यूज करता हूँ जब सामने कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट आता है इंटरव्यू में और मैं पूछता हूँ, जो मेरे से बहुत बार पूछा गया कि टेल मी बायोटेक्नोलॉजी करके मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो. That is the only time I use that.
But no, I used to have a lot of fun, and God was kind. God was kind. It is only in the later half when I knew what I wanted to do, जहाँ मैं serious होने लगा. Because I was never gold medalist. पढ़ाई में अच्छा था. फर्स्ट क्लास था मेरा. ग्रेजुएशन में 8.6 GPA भी आया. लेकिन I was never, a great student. But when I found what I wanted to do, I was the valedictorian. I won the gold medal over there for the best communicator as well. In my job, I've been pretty successful. And like I shared earlier, in 9 years to be leading the HR function, I don't think it would have been possible had I not followed my dream or not followed my calling. Exactly. वो ऐसे ही तो होता है. वो एक अंदर से आवाज आती है कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे यहाँ जाना है. तो सिंपल अपने दिल की सुननी चाहिए यार. बाकी तो दुनिया तो कुछ भी कहती रहती. तुम अच्छा करोगे तो भी वो यही कहेगी यार इसने ये कर दिया. I would like to know one more thing, yeah. Now since we are talking about the very beginning stage of your life, so there's one more thing which I would like to know. क्या तुम पहले से ही ऐसे थे? Like arranging things, organizer की तरह present करना, ये confidence and all. क्या ये सब पहले से ही था कि? Or do we have another story related to this? Now the reason why I'm asking you is because there are certain aspects in life which changes a person as a human. कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे कि इंसान का एक पर्टिकुलर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है. क्या कोई ऐसी चीज हुई थी आपके साथ जिसकी वजह से कि आप में ऐसा चेंज आया? See, actually, till the age of 14, मैं बहुत चुपचाप था. बस सिंपल उस टाइम बस पढ़ाई करता था, ट्यूशन्स जाता था, स्कूल जाता था. एंड आई वाज जस्ट, you could say, like average geek. I won't say geek, but जो पढ़ाकू रहता है, खेलता है, विलता है, सब कुछ है. But I wasn't that extrovertish, and I wasn't doing what I started doing later in life. What changed for me, or what changed my career or the career path, was my dad. And he told me, son, this essay competition, write it. And I was good at writing, so he encouraged me. The topic was quite bold. The topic was on sex education, and as a teenager I have a right to sex education and the importance, especially considering how HIV was spreading and about awareness, etc. So he said, son, you must write on this. I said, अरे पापा ये क्या controversial topic है, क्यों लिखवाना है? तो that was the first time I realized कि don't follow the world and do something हटके. तो जब मेरे डैड ने मेरे को encourage किया, मैं बहुत डरा beginning में. So when my dad told me, what you need to, so please write this, and I acted like what every teenager does. मैंने ऐसा एक्टिंग किया जैसे पापा ये तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है. I have no idea. ये अब क्या बोल रहे हो कि मैं क्या लिखूं पापा? Just like there's a saying, you don't teach papa how to make babies. तो ऐसा सिचुएशन हो गया था. और पापा बोला, बेटा आई अंडरस्टैंड, देखो मैं भी कभी एक टीनेजर हुआ करता था. आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, आप प्लीज लिखिए. एंड आई वन दैट कॉम्पिटिशन. I was called to Delhi. Of course, I went and visited Taj. That was a part of the award. And then there was this debate competition where I was speaking. And I was a 14-year-old guy. And I was speaking about sex education and the importance of HIV, spreading awareness about HIV, etc. And how the Indian system is totally missing this out. It is there where I got to interact with a lot of NGOs. And there's my journey as the youth ambassador for the country started, where I started working with the United Nations. And that is what changed. From the age of 14, when you start traveling globally, getting trained by the best in the world and coming and training that youth, I had that connect. I knew a lot of languages and my English was very good. So understanding, getting trained all over the world, coming to India, training the youth was what gave me that edge. That is what changed me as a person, from this quiet front bencher to this, notorious backbencher, which I then became. Well, that is really great. What I believe is like, there's a quote by Gautam Buddha, what you think you become, what you feel you attract, what you imagine you create. तो ऐसे ही कुछ शायद तुम्हारे साथ हुआ होगा, बिकॉज उस एज में जब तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे तरह के लोग होते हैं और जब हम उनकी सोच से इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ यार मुझे इन्हीं की तरह सोचना चाहिए, तो चीज़ें कहाँ से कहाँ ले जाती है इंसान को, और ऐसा एक्चुअली होता भी है.
और वो कोई मामूली से लोग भी नहीं थे, वो कोई ऐसे लोग थे जो कि फ्यूचर के बारे में सोचते थे. दे यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर. लाइक आज से 5 साल बाद अगर मैं ये आज स्टार्ट करता हूँ तो कल वैसे होने वाला है. तो और इंसान की सोच भी ऐसी होनी चाहिए. पर्सन मस्ट प्लान हिज थिंग्स इन सच अ वे दैट ही कैन सी, ही कैन प्रोजेक्ट हिज फ्यूचर. लाइक कि हाँ, आज से 5 साल बाद अगर मैं ये चीज यहाँ से शुरू करता हूँ तो आई सी माई सेल्फ देयर. Absolutely. Actually, I think that is when, that whole desire to work for a cause began. I worked with the Rotaract Club also, was the treasurer. I was the acting president. I've also been in charge of professional development for them. And I've always wanted a cause, See, I took up this job and I'm really good at it because, that's what the world needs and what the world is ready to pay for. But what I want to actually do and what I'm passionate about is this cause. I want to impact the youth. And which is why this book, if God is kind, and the best job would be for me to go all over the world, talk to people, inspire them. That would have been the best job for me. But the thing is, people don't know me and they're not going to pay me to do that. So which is why I found my Ikigai in the HR profession. But this passion is something which I need to feed, and that is why I've written this book. I want to spread this knowledge. I want to impact people. And like I said, if I impact 1% of the Indian youth, I think I would have done my job as a fellow Indian. And that is really great of you. Can you please give a message for our youth? I think stay true to yourself. Stop running after, stop running after this rat race. Stop running after others' expectations. Stop running after proving a point to others. Find yourself and you will find success. Exactly. Thank you so much. It was really great to have you on our show. This was Dr. Frederick Sidney Correa. And I am Humraj Bourai and you're listening to This Is That Show. Stay tuned. God bless.